states that explain what is meant by a moment of a force. So the product of force and perpendicular distance from the pivot of that force. Question number, is it 20? जी, तो हम क्या लिखेंगे? The product of force and perpendicular distance from the pivot. The product of force and perpendicular distance from pivot. Okay, the product of force and perpendicular distance from the pivot is called moment of force. Next is question B part. Figure 2.1 shows a system for raising a heavy piece of metal into a vertical position. Heavy piece of metal into a vertical position. A man pulls on the rope with a horizontal force T. The piece of the metal has a weight of 2000 Newton and is freely pivoted at A. The system is in equilibrium. By taking moment about A, calculate T. You have to calculate T. So बच्चे, where is T? Okay, this one is the T. ये है T is the tension in a rope. तो moment का फॉर्मूला सर होता है, yes. सर आज क्लास जल्दी खत्म होगा या हाँ, अभी हम 2-3 और क्वेश्चन कर, ठीक है? ठीक है यानी 11:30 तक तो नहीं ना नहीं नहीं, और सर कल छुट्टी है या नहीं है नहीं नहीं, कल नहीं छुट्टी। सर 14 अगस्त है सर हाँ, नहीं, असल में ना मैंने नेक्स्ट वीक जाना है आउट स्टेशन, अच्छा तो मुझे 2 छुट्टियां करनी पड़ेंगी। ओके सर फिर ऑन कर लेते हैं हाँ, इसलिए मैंने सोचा सैटरडे को भी क्लास होगी। हाँ जी ओके, सो मोमेंट इक्वल्स एफ इंटू डी। इसमें एफ इज द टेंशन एंड व्हाट अबाउट टी? डी। डी शुड बी, क्या लें? सर टी आप एफ इज द टी टी लेके एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डी हेयर? सर पिवट है यहाँ ए पे तो 0 8। ओ हाँ परपेंडिकुलर है नहीं सर 8 कैसे है 8 is the perpendicular distance from the pivot. लेकिन सर And टी तो जेड पॉइंट पर नहीं है now check in this. अच्छा फिर अच्छा अच्छा ठीक है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो इससे हाँ। हाँ तो नेक्स्ट इज मोमेंट की वैल्यू तो नहीं दी हुई ना? नहीं अब हम और क्या करें? सर इन्होंने बताया हुआ the the piece of metal has a weight of 2000 newtons सर इसमें F1 D1 is equal to F2 D2 नहीं लगाएंगे हाँ सर वही लगाएंगे आई थिंक F1 क्योंकि D उन्होंने बताया हुआ भी है कि the system is in equilibrium 1000, and what about its distance from the pivot? 1000 का डिस्टेंस क्या होगा पिवट से? सर 2 meters 2 होगा। Why? क्योंकि सर इससे Perpendicular. परपेंडिकुलर इस साइड को ही है हो रहा ठीक है सर है? So जी always take a perpendicular distance. सर अभी भी आवाज क्लियर है या नहीं पहले होती है उस तरह नहीं है, सही है। अच्छा 1000 सर नहीं मुझे समझ आ रहा है मुझे T equals 4000 divided by 8. चेक करें, 4000 डिवाइड बाय 8। सर 500 500। so the सर tension अब is, आवाज ठीक है जी ठीक, ठीक है 500 Newton. Next जी is the force T and the force that rope exert on are related by Newton's third law.
State the relation force T force that force T force exert on the man are related by Newton's third law. State the relation क्या होगा? Hmm. सर इसमें बताएंगे कि सर the force T applies tension and the rope then exerts a opposite force due to the tension on the man. देखिए ना, if the tension is towards left, force on towards right. Okay, जी. तो हम लिखते हैं the the force T force rope exert on the man. The man are equal in magnitude, are equal in magnitude, but opposite it in direction. Are equal in magnitude, but opposite in direction. Next is 21. Figure 2.1 shows apparatus the turning force. Test. The uniform meter rule is free pivoted at Newton meter is centimeter from the pivot and 4 Newton weight 40 centimeter from the pivot. The meter rule is in equilibrium. The principle of moment for a body in equilibrium. हम क्या कहेंगे? In equilibrium, the sum clockwise clockwise moment is equal to the equal to sum of anti-clockwise clockwise moment sum of clockwise moment equals to the sum of anti-clockwise moment Anti-clockwise moment. about pivot. The pivot. सर एक बात है एग्जाम में दो लाइंस गिवन होते हैं ना. The तीन. जी ठीक. Next is calculate the reading on the meter. How can you calculate the reading on the सर ऊपर करना डायग्राम दिखाना. सर तो उस पॉइंट पे फोर्स ढूंढना होगा बेसिकली है ना. where is the pivot? This one is the pivot 20 and नहीं 40 लेंगे इस नहीं. यहाँ पे this will get a clockwise जी. and ये भी tension एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना है. tension the spring exerting a force in ओह. upward direction that will एंटी क्लॉकवाइज. clockwise have to rotate the body about the ठीक है. तो करते हैं clockwise moment equals एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. wise clockwise. Now clockwise moment is the force the distance 20 and next is anti-clockwise moment 4
40. This should 4. So करो. Over 28 8 बन गया सर. Points. सर पॉइंट जीरो लिखना जरूरी होता है. आंसर ठीक है. although आप 8 भी लिखेंगे, but answer should be the weight of the meter ruler is this. Calculate the size of the force exerted on the meter rule by the pivot. Size of the force. क्या होना चाहिए? सर हाँ, इस ऊपर करने से डायग्राम दिखाना. नहीं सर, इसको ये कैसे करेंगे वैसे? Size of the force. Exerted on the meter rule by the pivot. Weight is 1 point. Is acting at the middle जी. point. I calculate the size of the force exerted on the meter. By the meter rule on the pivot. ये कैसे करेंगे? So how many forces we have? We have 2 downward forces and 1 upward force. करते हैं. Downward is 4, 1.2. सर जी जी. ठीक है सर. Okay. मुझे लगा आप चले गए. नहीं नहीं. Let's suppose the pivot will exert upward force. अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि we have upward forces equals downward equilibrium. So upward forces are force due to pivot plus force thing. Force F plus force due to is A. And downward force is 4. This will be 8 minus Newton. Oh, 4 Newton. चेक करें. आंसर चेक कर लेंगे. कौन से चेक? मार्किस. क्वेश्चन नंबर 21 है. 21 last part, C part. 2.8 newtons. इन्होंने किया 4 plus 1.2. 4 plus 1. or 5.2. The weight of the weight acting on the pivot is downward. It is downward. Hmm. तो लेकिन यहाँ पे calculate the size of the force exerted on meter rule by the pivot. हाँ उतनी force लगाएगा जितना करेंगे. Upward force is upward कितनी
upward is just 8, downward is 4 plus 1.2, ये बन जाएगा 8 माइनस 5 पॉइंट, चेक करें। 8 माइनस 5.2 कितना बनता है? So 8 plus 5.2 8 माइनस 5.8, minus 2.8 आंसर ठीक आ गया। अब इसको कहते हैं वेट ऑफ द मीटर रूल इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट तो नीचे की लगेगा। कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोर्स exerted ऑन द मीटर रूल बाय द, ये पिवट उस पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा, पिवट उतनी ही लगाएगा जितना उसका वेट है। एंड हैव टू चेक हाउ मेनी फॉरवर्ड, हाउ मेनी फोर्सेस आर डाउनवर्ड डायरेक्शन। So upward is just 8 and downward is 4 plus. So the net force is 8.2 Newton is acting. This is the force exerted on the meter rule by the यहाँ तक देखें कोई confusion? No sir. Next है describe an experiment. ये करते हैं. Describe an experiment to verify the principle of moment. You may include a diagram in. क्या लिखे? Principle of moment को explain कैसे होगा? सर इसमें हम दो चीजें रख लेंगे, इक्वल मास एंड उसका डायरेक्ट इक्वल मास डायरेक्शन पर, और उसके बाद में बताएंगे कि दे वोंट मूव इन एनी डायरेक्शन। और apparatus क्या क्या होगा? सर एपरेटस सर एक सीसॉ सा ले लो और और दो साइड्स पर कोई मास के ब्लॉक्स ले लो, उनको इक्वल डिस्टेंस पर डाल दो। कैसे कर, कि उन्होंने कहा डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे IGCSE में क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लेते हैं, स्केल मीटर रूलर, हम पिवट, पिवट को फिर भी है करेक्ट, साइड यू है करेक्ट, ठीक है। और द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मान लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज, दिस वन इज, एंड द वेट इज डाउन। तो इसमें हमें अपरेटस क्या क्या चाहिए? द अपरेटस इज
apparatus, meter ruler, meter ruler, pivot, और masses. फर्स्ट स्टेप क्या लिखे हम इसमें अब्दुल्ला? So first step हम लिख लेंगे would be Place हाँ place mass the blocks. rule अच्छा मीटर के साथ. on pivot. Okay? You have to place ठीक. them on pivot and and adjust just it until just it until is is balanced horizontally. Is horizontally. फिर इसके बाद place the two known masses known masses place the two known masses until the ruler is horizontal until ruler is horizontal and stationary and stationary हो गया. Next is calculate the clockwise and anti-clockwise moment. Calculate Clockwise and clockwise anti-clockwise movement. anti-clockwise moment. Wise moment. हो गया. Calculate the clockwise and anti-clockwise moment. Or if ऐसा लिख by formula formula क्या होगा? By the formula 1d1 equals to आगे इसके बाद लिखते हैं the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment equal clockwise moment. This shows the verifying the principle of this shows the principle of moment. Yeah, ज़्यादा लेंथी. नेक्स्ट पढ़ें बी पार्ट. जी अब्दुल्ला. A figure shows a force of 8 newtons is applied to the span at a perpendicular distance of 0.15 meter from the center of the nut. Calculate the moment of the force acting on the nut. Moment of the So इसमें F M is into equal to F नहीं लगा लो. m equals F is the force which 8 8 0.15 1.2. 1.2 Newton meter. क्या न्यूटन मीटर जो है वो आपने यहाँ पे ऑल दो न्यूटन
but for the moment, okay, जी, ओके। काफी है। हाँ जी सर, बाकी फिर कल कर लें। हाफ़िज़ सर। काफी